What do you think is the most important thing in cricket? This is my pet project, something I've been working on for the last 1.5 years. Let me show you some of the details. Cricket की foundation यहाँ से शुरू होती है. This is one of the most important parts of my cricketing gear. Initially, we started off with sketches, as you can see, small little details of measurements, of positioning, of angles. We got to a place where we made this, which was the first version of the cricket shoe. बहुत डिटेल शेयर हुई, बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ. उसके बाद वी गॉट टू दिस प्लेस, जो कि है फाइनल शू, विच इज़ व्हाट आई वेयर ऑन द फील्ड टुडे. बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में. इवेंचुअली आई एम गोना शो यू ऑल द डिटेल्स नाउ. कम ओवर. अब शू के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द सोल. तो जब आप फील्ड पे खेलते हो, जो सोल है, जो स्पाइक्स का स्प्रेड है, जो बैलेंस प्रोवाइड होता है और जो ग्रिप होती है आपको जो मिलती है एज अ एथलीट, उससे मेंटली यू फील कॉन्फिडेंट कि आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द शू. उसके बाद आता है अपर. तो अपर में सबसे ज़रूरी चीज़ है ब्रीदेबिलिटी, वेंटिलेशन. जब आप बहुत देर तक फील्ड पे खेलते हो तो आपको चाहिए एक अपर, बिकॉज अदरवाइज योर फुट बिकम्स टू हॉट एंड इट्स नॉट अ कंफर्टेबल फीलिंग वाइल प्लेइंग ऑन द फील्ड. आई लव इट, ऑफ कोर्स, इट्स परफेक्ट फॉर मी. उसके बाद है इनसोल, द कुशनिंग. अगेन very intense movements, बहुत pressure होता है on the foot when you move at that speed, when you change direction. So you need an insole which provides enough cushioning, enough comfort, enough grip for you to make those movements. This is that detail. And probably the most important part of the shoe for me is the heel clip. The feeling you have that you won't twist your ankle or you won't twist your foot comes from the stability that this provides. So this is the most important part of the shoe for me, and I think we've cracked this amazingly well, and that's the feedback from me and all the players who've been using the shoe as well. So I absolutely love this. A bit more about the spike and the stud. So as batters, we use spikes on the front of the sole and 4 studs at the back. So the quality of the spike is very important. So these ones, of course, you can see the color as well, and the quality is top. तो जब आप शू यूज़ करते हो, they go on for a longer period of time, so you don't have to keep changing the nails. And बहुत underrated part है शू का, लेकिन बहुत ज़रूरी है, is the laces. अभी इसमें कितनी डिटेलिंग जाती है वो बहुत लोगों को पता नहीं है. तो अगर आप ये पहला वाला शू देखोगे, कि फोकस ऑन दिस, ये थोड़ा ज़्यादा रफ लगेगा आपको, राइट? And another version we did was too synthetic. So laces में what you want is it should not be too rough, because otherwise there's no movement for you to tighten the laces. अगर too synthetic होगा तो वो place में नहीं रुकता है. So a combination of both is very important. So you can fasten the shoe as tight as you want, and then to keep the laces in place बहुत ज़रूरी part है. इसके भी 2-3 version हमने try किए हैं, but yeah, we got the perfect one in the end. So pretty happy with that. Let me dissect this and show it to you guys. There is the tongue. Don't try this at home, huh? There you go. Now that the shoe is split open, I'm going to show you the parts that we spoke about. So when you're standing in your stance, the balance of the shoe is the most important thing. तो ये heel clip. दूसरी चीज़ है the upper, जो कि breathability और movement में आपको बहुत help करता है. And तीसरी चीज़ is the cushioning, जो कि is the most important factor for playing for long hours, और आपको जो comfort provide होता है आपके पैर में, उसके लिए सबसे ज़रूरी है the right use of cushioning. इसके भी हमने 3-4 versions को back and forth discuss किया, accept किया, reject किया. उसके बाद the final one is here. So yeah, these are the few details of the shoe.